Hey guys, welcome back. Today again I'm late. I'm really sorry for that. Am I audible and visible clearly? Let me open the live chat. Okay, and let me put my phone on live stream. So Codecules is live. I hope you're getting the notification and we will start. आज का थंबनेल कैसा लग रहा है guys? If anyone is watching, do like the stream. And today we will start solving 2D array-based binary search problems. Where are my words? Hello, Vamsavardhan. You're back. Thank you so much. Let me connect my Bluetooth. Yesterday was a very bad day for me, to be honest. I had my worst day of the month yesterday. Where is my notebook? Revision, I think every day we can revise in the daytime. आज मैं करने वाला था लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। कल का स्ट्रीम भी ऐसे ही जल्दी खत्म कर दिया था क्योंकि आई वॉज अ लिटिल सिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Yesterday I was not feeling well, and I had my assessment which went terribly wrong. So today we will start solving 2D array based problems. Where is my notion? Here it is. And today is day number 20. Let's create a new checklist for today. क्या लगता है वंशवर्धन आज Vamsavardhan is saying I wasn't there also. Today my exam was afternoon shift and my NPTL exam got bad. Don't worry, you will still gonna get your NPTL certificate. But मेरा तो यार बहुत ही बुरा रहा कल का दिन. Yes, 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 online assessment, bro. So it is step number 4 and lecture number 3. That is binary search on 2D array. Vamsavardhan is saying I will get certificate, but I need 90 plus percentage. Why, bro? Why you need 90 plus percentage? Why you need so much accuracy? It's okay. Like you will have to try again if you don't get 90 plus. I'm getting lagged in BSA. Why, bro? Why do you feel so?
Hmm. Vamsa, are you like giving the contest on late code regularly? I wanted to give that contest today, but in 1 week I have semester exams. You're in third year, right? It happens. It happens. मतलब जब मैं भी कोशिश करता था डीएसए करने की थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में तो ऐसा ही कुछ हो जाता था कि कभी मिड सेम्स आ जाते थे कभी एंड सेम्स आ जाते थे एंड आई यूज्ड टू प्रोक्रास्टिनेट के अरे यार अभी तो एग्जाम्स हैं लेट मी स्टडी फॉर एग्जाम्स वैसे यार इट इज फाइन योर सेमेस्टर एग्जाम्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट बट डोंट लाइक डोंट फॉरगेट टू सॉल्व डीएसए प्रॉब्लम्स come back as quickly as possible. So today we will try to solve these five problems. First is find the row with maximum number of ones. यह मैंने पहले कभी सॉल्व भी नहीं किया है आज ट्राई करते हैं सर्च इन आर 2D मैट्रिक्स ओके 2D मैट्रिक्स मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना वंसा आई शुड कॉल यू वर्धन ओनली राइट इज इट ओके इफ यू कॉल यू वर्धन वंसा वर्धन is too long to pronunciate. And the third problem is search in a row and column wise or sorted matrix. Okay, row and column wise sorted matrix. Find peak element. Krishna is asking how do you do revision bro? वैसे तो मैंने प्लान किया था कि मैं एवरी वीकेंड पे रिवीजन करूंगा जैसे सैटरडे संडेज को बट इस वीक में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं रिवीजन नहीं कर पाया but we will try. Mm, although, like, I keep studying all the other time when I'm not streaming as well, so मेरा revision थोड़ा हो जाता है वहाँ पे. But I'm also trying to stream that as well when I'm revising problems. Okay, 2D matrix. Okay, matrix median. Okay, fine. So these five problems we're gonna do. Vamsavardhan is saying yes, but my assignments and records. What happened to your assignments and records, bro? Mm, I stuck at arrays at medium level. Actually, I don't know what's the proper approach to do revision. There's no proper approach. Like, try to solve as many problems as possible first, and then when you're revising, try to solve the problems that you have already solved or like seen the solution of those problems. Try to solve those problems by yourself somehow. Like, अगर तुम लाइक कोई प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर चुके हो एक बार या दो बार या फिर उसका सॉल्यूशन देख चुके हो कभी तो कोशिश करो कि उस प्रॉब्लम को खुद से ही करो एंड लाइक गिव एटलीस्ट 20-30 minutes trying to solve that problem अरे डोंट वरी ब्रो यू आर इन सेकंड ईयर you have plenty of time just try to learn one topic or concept every single day and try to revise everything you have done all the week like Vamsavardhan is saying 3 generations are covered here. Bro, when you are revising, don't read code. Just try to solve the problems. Like, how much have you already studied or like which language are you working on, Krishna? Hmm. Are you
You know what? There are two approaches to this. Okay, C++. Then you should try to solve problems in C++. You might be familiar with lead code and code forces एंड हैकर रैंक ये जैसे ये जो भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में तुम्हें पता है ना वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके ना इजी लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो सी प्लस प्लस में ओके देन ओनली यू विल बी एबल टू रिवाइज once you are able to solve easy level problems then move on to the medium problems and on every week like try to solve all the problems that you have already solved if you can solve them afterwards as well वैसे गाइस थंबनेल कैसा लग रहा है आज का वंशवर्धन वर्धन जी कृष्णा और वर्धन बताओ थंबनेल कैसा है आज का देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग आवर टुडेस प्रॉब्लम्स एम आई अनोइंग यू गाइस ये डे 19 वी इट नॉट Krishna is saying I haven't visited any platform just solving and learning the A2Z driver sheet it is okay but you should like use platforms like GFG and LeetCode also like you need to be familiar with that Vamsavardhan is saying no about what like thumbnail अच्छा नहीं लग रहा है Vardhan, what are you talking about? Like, uh, the thumbnail is not good, or the nickname I'm trying to give you, Vardhan ji. Okay, I'm not annoying you. Okay, that is fine. That is fine. And Krishna, you were asking about how to do revision, and I have made it clear already. So आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करें क्या? तो कैसे लाइक वंशा वर्धन बोलते हैं या वर्धन जी बोलते हैं? वर्धन जी वैसे मतलब क्या होता है? लाइक व्हाट डज योर नेम मीन्स? वंशा तो ये हिंदी वर्ड हिंदी का वर्ड है या फिर इन सम अदर लैंग्वेज इट इज Krishna is asking, bro, I came here for the first time. Can you introduce yourself? Why not, bro? My name is Harshit and I am currently in final year of my college. And I had started this series to like build some habit of solving problems regularly. I was late. Vamsa is saying, Bhaiya, how to make online notes? I am also struggling to make notes. Okay, one thing I found today was something. Okay, you are from Hyderabad, Telugu. So, what does your name means? Vamsa means what? I think I should not reveal my college's name right now. Like you can check out my LinkedIn. Okay, Vardhan is next. Okay, it is something I know. What Vardhan? Okay, what I was saying? Canva.
in the channel's description and as well as in the my video's description. Krishna, my LinkedIn profile is in my channel's description as well as in my video's description. Mm, okay. Okay, Vamsa means family. We are a family now. Vamsa. इसको रिमूव कैसे करें? How he was doing it every once and this. Are you guys good at web development? Can you tell me how to hide this div that I'm trying to hide? इंस्पेक्ट में जाके प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करते हैं सीएसएस वाली डिस्प्ले नन करना है इसका बट आई डोंट नो हाउ कैन समवन टेल मी इतनी बेसिक सी चीज नहीं पता क्या मेरे को इज इट दैट बेसिक मतलब मुझे आता है लेकिन इंस्पेक्ट में जाके कैसे करते हैं ओके एडिट एज एचटीएमएल एंड वेयर इज इट्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहाँ है इसकी where can I find this editor ये ये कौन सी क्लास है यार टेलविंड सीएसएस का तो नहीं लग रहा हम्म, हम्म, हम्म।
Forget it. Let's use this whiteboard as it is. And we were on VS Code को बंद करते हैं, driver sheet को खोलते हैं, then it will not be visible, right? I will have to fix it. अभी whiteboard visible है ना? Mm, let me see. Let's put it here. And let's add another window. Window capture need whiteboard. Whiteboard. Okay. And okay. Here it is. And where is the ship? ये क्या हुआ? Yes, को कहाँ है? Can I undo this? Where is आज तो मैंने पैर पर कुल्हाड़ी मारी. Where is that window? Where it is? Right. Now it will be visible. I hope so. Let's take this out. Okay, it is visible now, and we will add it here. Okay, now it is visible. Fine. Now let's continue. Start करते हैं आज का problem. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी तो. We are already 10 minutes late. 10:30 पे start कर देना होगा. And you guys, do you have any doubt or like you want to ask anything? Krishna and Vardhan, don't jump to the solution. Lower bound implementation, upper bound implementation, find the first occurrence of a number. Okay, these are the prerequisites. Let's read the problem. Problem statement is you have been given a non-empty grid matrix with n rows and m columns. Okay, consisting of only zeros and ones. All the rows are sorted in ascending order. Okay, rows are sorted in ascending order. Okay, your task is to find the index of the row with the maximum number of ones. Your task is to find the index of row with the maximum number of ones. Okay, we need to return the index of the row which has the maximum number of ones. If two rows have the same number of ones, consider that one with a smaller index. If there's a no row with at least one, return -1. अच्छा ये वाला प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स से करके देखते हैं पहले by ourselves. It is not available on lead code. Let's search on GFG. So what is the problem? Find the row with maximum number of ones. Find the row with max number of ones. GFG. Okay. So are you guys getting the problem? What is the problem that we need to solve? We are given with okay. Let's say
Mm, we are given we are given a 2D array or matrix, and how we can make it. Mm, shit. Where we can right so I want to make sure it's let's say this is a matrix scalar integers will calculate. So this is a matrix where it contains only zeros and ones and इसमें number of rows कोई बता सकता है कितनी है? It has m number of rows, right? क्या given है problem में? N rows. We have like n rows. It is of a matrix of n plus n, where n is the number of rows. Okay, and m columns, and it contains zeros and ones. Let's take the example. 3 by 3 matrix. Let's say it has one here, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, and 0, 0, 0, 0, 0, 0, and 1. So we need to find out the index of the row which has most number of ones. Okay, maximum number of ones. Your task is to find out the index of the row with the maximum number of ones. Okay, so find row with max number of ones. How can we find out this? Like with brute force approach, what we can do? These are the columns up to m. It is 0th index, this first index, this second index, this third index, and it is the number of rows
Indexes are 0, 1, 2, 3. So we have a 4 by 4 matrix. 4 by 4 currently. Okay. So by brute force, what approach comes to your mind? How can we solve this problem? We need to find, okay, for loop वाला approach आएगा ना simple सा कि like we will implement for loop for int I is equals to 0, I less than that is n और int n is equals to क्या होगा array dot length, right? And int m is equals to arr dot 0, sorry, array of 0 dot length. Okay, so we have to find number of rows containing ones. No, we need to find out the index of row which has maximum number of ones. मतलब जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स गिवन है अगर, तो इसके अंदर कौन से वाले रो के अंदर जो नंबर ऑफ वंस है ना वो मैक्सिमम है. Like we will check for the first row, it has four number of ones. So we will set, like we will create one variable which contains the maximum number of ones already encountered. Then we will check the first row and check how many number of ones are there. We will store it in our temporary answer. Then we will compare the second row. Then we will compare the third row. Then we will compare the fourth row. And after all rows are traversed, we will check if like which row contained the maximum number of one. So in this case, this first row contains the maximum number of ones, that is 4, right? So we will iterate over each row and each column. In this problem, we are not implementing. Yes, brute force will be n square. But is it given that we can't solve it by brute force? It is not given. So we can try to solve, right? We are just trying to learn about the problem. के problem actual में पूछ क्या रहा है, then we will try to implement binary search. Okay. Okay. I less than n and I plus plus. Hey guys, am I visible and audible? Hey guys, hello. Vamsa is saying after this question I will sleep. I don't have sleep from 3 days. Okay, it is completely fine and I have been sleeping since 3 days. So I will not. Yes, bro, power cut हो गया. And we won't stop today because मेरे phone में आज recharge है. So we will continue with my phone. It is really annoying for me यार. अभी last 3 दिन से ना मेरे साथ यही हो रहा है. Like I was trying to start the stream at 8 o'clock, 7 o'clock, but the power got me. I am cooked now. अच्छा ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं. तो वी विल इटरेट ओवर each column as well. So we will say int j is equals to 0, j less than m, and j plus plus. Okay, then what are the variables that we should make and keep in mind? So after, let's say int max 1 is equals to 0 and int c max is equals to 0 as well. And we will iterate over each row, and after comparing each row we will
हैव टू रिटर्न व्हाट? वैसे रिटर्न क्या करना है हमें? इंडेक्स ऑफ रो रिटर्न करना है ना? हम्म, ठीक है। एंड लेट्स से इंट आंसर, इंट रो with max 1 is equals to 0. So ठीक है. And then am I making unnecessary variables? I don't know. I want to solve it aggressively. जो भी लॉजिक समझ आए सॉल्व कर देते हैं. सो ठीक है, रो विथ मैक्स 1 इसमें हम आंसर स्टोर करेंगे. Hmm, ठीक है. करंट मैक्स को लाइक एवरी रो का हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे. एंड देन इफ वी एनकाउंटर, ओके, इफ array of I comma j is equals to 1, अगर हम 1 एनकाउंटर करते हैं तो what we will do, we will update the current max, right? Comma j is equals to 1, we will increase c max. Okay, by the end of the for loop, c max will contain the number of ones that particular row is having. Rahul Bist is in the chat. Hello Rahul, welcome back. आज पावर कट की वजह से हमें अंधेरे में स्ट्रीम करना पड़ रहा है. एंड हाउ आर यू राहुल? हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज योर कॉलेज? Okay, so after every, like in each row, we will have calculated number of ones in the cmax, and we will compare if it is the maximum. So, and we will update max 1 with the max of 2 math dot max of max 1 comma c max. Okay, and we will store it in that max. And we need to क्या किया ऐसा तुमने? Why do you do that, bro? Focus on your studies. Okay, इसका इंडेक्स कैसे स्टोर करें हम? Hmm, if C max is greater than is if Vamsavardhan is saying voice not coming. Why, bro? I think my voice is clearly audible. Like, from my end, it is clear and crisp. You can check once again if I'm audible. Right. Okay, if C max is greater than max 1, then update the row with max 1 with I. Okay, equals to I. That means we will update the I row with it if C max is greater than. Okay, max 1 equals to max dot max.
1. It is fine. And at the end, we will return the index of the row which has the maximum number of ones. So that will be return row with max 1. अभी तक सही है ना? वर्धन जी, वंशवर्धन, ये वाला लॉजिक सही था ना? पता नहीं कहाँ चले गए सर। गाइस लाइट आ गई है। Okay, compilation completed. Answer is correct, and let's run submit it. Okay, it worked out. And how can we implement binary search in this? ब्रूट फोर्स से तो चल गया ये राहुल। तभी आज थोड़ी देर हो गई थी। लाइक अच्छा, तुम्हें आने में देर हो गई थी। It is done, but how can we implement binary search in this? I have no idea. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा? टू यूज implement lower bound and upper bound, first and last occurrence in an array. Okay, but we are going to use binary search algorithm. अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि सारी रोज सॉर्टेड होंगी? मतलब जितने भी जीरोस होंगे वो स्टार्टिंग में ही होंगे। अरे एकदम फाइन ब्रो, आई एम गुड। कल मूड ठीक नहीं था यार। तबीयत ठीक थी, मूड ठीक नहीं था। So it is given that the rows are sorted. That means all the zeros are in the starting, not at the end. But erase it. इसके साइज को डिक्रीज नहीं कर सकते क्या? राहुल, पढ़ाई लिखाई करनी है या नहीं करनी है?
या बस ब्लॉक होना है इंस्टाग्राम पर। We need to- I am aligned with this। चलो भाई, आप अपना करियर बनाओ, मैं अपनी बनाने में ध्यान देता हूँ उससे। ओके, फाइन ब्रो। मेरे फोन का स्क्रीन 4 मिनट पीछे क्यों चल रहा है? ओके, नाउ वे बैक। And how can we implement binary search? Implement lower bound, upper bound, and first occurrence. Here we are going to use the lower bound function to find the first occurrence. You can use the other method as well. मेरा भी मूड ऑफ हो गया था कल, ऐसे ही मुझे मेरी कंपनी ने धोखा दे दिया था। Hmm. I'm waiting for my friends to join. Why they are not joining today? Okay, first we will declare two variables, count max initialized with 0 and index initialized with -1. The first variable will store the maximum number of ones we have got, and index will store the number of rows. Okay, number of row number, index of the row. Next, we will start traversing the rows. We will use a loop say I to select each row at a time. Now for each row, I will use lower bound to get the first occurrence of one. Now using the following formula, we will calculate the number of ones. Number of ones equals to m number of column minus lower bound, that is 1, 0 बेस इंडेक्स। ओके, मतलब हम ना लोअर बाउंड अकेला फाइंड आउट करेंगे कि पहला वन हमें कहाँ मिल रहा है, और हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ लाइक जीरोस मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी विल डू, वी विल काउंट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वंस। यहाँ पे ना जीरो नहीं होगा, इन दिस it is not 0, it should be 1, क्योंकि the rows are already sorted। And how we are connected? हेलो। पर भाई की हालचाल कैसा रहा असेसमेंट वैसे, ओवरऑल, कल वाला? हेलो बॉस, व्हाट इज अप?
आपने जो टास्क दिया था वो मैं कर रहा हूँ ना अच्छे से। पर सर, क्या बेकार। अरे सर, आपका बेकार जाएगा तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? तीन तीन चार चार कंपनी क्रैक करके बैठे हैं आप। अच्छा बताइए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें पर भाई? इसमें बाइनरी सर्च लगाना है और फाइंड आउट करना है द इंडेक्स ऑफ द रो विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। ओके। भैया मेरे 50 क्वेश्चन हो गए लीड कोड। क्या मुझे अमेजोन में जॉब मिल जाएगी? भैया मेरे 75 हो गए लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिल रही है लीड कोड पर। आज कोई भी सबमिशन नहीं हुआ है। लेट्स डू इट। यार आजकल ये यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा यार वीडियो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पर मेरी आवाज आ रही है ना? हार्ड कौन से कर लिए? हाँ, हार्ड हार्ड प्रॉब्लम। ये रहे हार्ड प्रॉब्लम्स। 14 हार्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम ना ये एरे वाले हैं। इसमें तो चार पांच ही हैं। लाइक काउंट नंबर ऑफ सब एरे विद गिवन इज ऑल। बाइनरी सर्च से ही किए हैं, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। ये वाले सारे हार्ड प्रॉब्लम्स किए हैं बस। हम्म, ये पेंटर्स पार्टीशन है, स्प्लिट एरे, लार्जेस्ट सम है, मिनिमाइज मैक्सिमम डिस्टेंस टू गैस स्टेशन है, मीडियम ऑफ टू मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज है। ये सारे प्रॉब्लम्स किए हैं बाइनरी सर्च वाले हार्ड में। बाकी आज ये चारों कंप्लीट करके स्ट्रिंग्स स्टार्ट कर दूंगे फाइनली। हम्म। ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। आपका क्या चल रहा है पर भाई डॉन? आपके वो इंटरव्यू की डेट आ गई क्या? पर भाई, मिस्टर पर द बॉस, खंडवा के डॉन। ज्यादा ही आप कर रहा हूँ क्या? ओए पर, कहाँ गया? भाग गया क्या? अभी तो आ रहा हूँ, मतलब अभी भी डेट नहीं आई, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं ना तेरा? बाकी कुछ कुछ लोगों का हो गया ना इंटरव्यू। चल मजाक मत कर भाई। ऐसा तो नहीं करेंगे। मना कर दिया भाई इंटरव्यू के लिए उन लोगों ने। ऐसा तो नहीं करेंगे। यार इन लोगों को भी बुलाना यार, सबको प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं इनसे। 2-3 दिन से स्ट्रीम की रीच नहीं जा रही है अच्छी, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। 41 व्यूज। मजाक कर रहा है ना? मना तो नहीं किया होगा?
चलो बाइनरी सर्च लगाते हैं इसमें। अपर बाउंड के लिए क्या करना होता था? ठीक है, सी मैक्स वी विल स्टोर इट हियर। वी विल कंपेयर देयर itself। सी मैक्स भी नहीं बनाते, इसको आईडीएक्स कर देते हैं ओनली। आईडीएक्स। पर तुमने कर लिए क्या? लाइक बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं क्या कई सारे, या थोड़े बहुत, या कुछ भी? Okay, for I, and what will be the low is equals to 0 and high is equals to m. Okay, m minus 1 होगा या m होगा? m होगा। Hmm, while low is less than equals to high, less than high, and we will create mid is equals to low plus high minus low by 2, and then we will check if the mid element is 1. If the mid, okay, array of I comma mid is equals to 1, that means we need to update the array, and we will use। पर भाई बोर हो गया। यार इतनी बोरिंग स्ट्रीम है क्या मेरी? ये वाला प्रॉब्लम तो यार अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, व्हाट वाज गोइंग ऑन? If array of I comma mid is equals to 1, then we will drop the right sub array and iterate over this, then high will be equals to mid minus 1. Otherwise, we will iterate over the right sub array. That means low will be equals to mid plus 1. Mm, okay, up to this point it is okay. Mm, okay, bro. सारा वे सेम चैट पे कम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करो। अब से चैट बंद ही कर देते हैं, पढ़ाई करेंगे सिर्फ। आज से चैट बंद। अब सॉल्व करते हैं इसको। वाई लो इज लेस देन हाई इनफिनिट इक्वल्स। ठीक है, मिड एलिमेंट इज ओके। वी नीड टू रिटर्न द फर्स्ट फर्स्ट occurrence of 1। if mid is equals to 1। ओके, एक चीज और कंपेयर करनी पड़ेगी ना, कि लाइक नंबर ऑफ वंस कितना है। if at the mid we found 1, then it is possible that 1 can also exist on the left side of the mid. So we will check
on the left side. And how will we write that? We have already encountered one, and check the number of ones already encountered. We will update max 1 equals to match.max of max 1, comma, and how we were going to identify mm, m minus, that is the number of columns, minus the mid. Okay, mid is the index at which we have found 1, so it will return the number of ones already, and it will update the flag. And okay, and then we will return. Okay, index idx पे हम क्या स्टोर कर देंगे? I idx is equals to. Okay, one more thing we need to keep in mind. If, sorry, mm, here we check if m minus mid is greater than max 1, then update idx with I. Okay, up to this point it is fine, and then we will return idx. Idx is the index of the row which contains the maximum number of ones. Mm, okay. Mm, After the next one, we will return idx. Okay, delete this. Let's try to run this. I hope it will work. Mm, लो I shit, यहाँ पे डेटा टाइप पे कुछ नहीं है क्या? Wait, load I. That was a mistake. Okay, it is working. Let's submit it. Uh, Okay, what's the error? Mm, where are we doing it wrong? Mm, Section. So, so it should be this. क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? Lois person equals to high करते हैं. One thing here, y is equals to m is the number of columns, and let's do this m minus 1. M minus mid is okay. And where else we are doing it wrong? Like it is returning the, it is not counting the first one. I is equals to 0. We are starting from I is equals to 0 and comparing if mid is equal to 6. Okay, if mid minus max is greater than max 1.
M minus mid is okay. Let's try to run it again. Finally, so again it is going to okay. This time it worked. बहुत सिली सी मिस्टेक थी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया था ओके ठीक है बट इट वर्कड on the first time it was also working. So the first problem is done for the day. Then the second problem is search in the 2D matrix. So let's solve this problem on leak code before the time ends. And is my connection okay? Like, is there any problem with my connection? I have to check it because if my live stream is not working, then what will I do? Oh, shit. Guys, am I audible? And is the stream working fine? Hey guys, if someone is watching, please let me know if the stream is live or not. So it is right. Okay. Hello Ankit bhai. Okay, I asked you to connect with me. I could not. अब आज आपसे ही बात करते हैं. Like first problem has been solved. Hmm, ठीक है. Power is back again. I'm annoyed with this thing. Hello Ankit bhai, कैसे हो? How are you doing? And right now we are solving this problem. Search in a 2D matrix using binary search. Mm, we are given an m cross n integer matrix with the following two properties. Each row is sorted in non-decreasing order. The first integer of each row is greater than the last integer of the previous row. So that means we have a matrix in which every row is in sorted manner. We need to find some number. Given an integer target, return true if target is in the matrix or false otherwise. You must write a solution O log of m cross n time complexity. So I think it is a little easier for us because we have been solving these problems weekly. So let's do this. What is up, Ankit bhai, who did not responded? Hmm, अच्छा टाइमर लगाते हैं आज इस प्रॉब्लम पे. ये लॉगिन नहीं क्यों क्यों नहीं है लीड कोड पे. Let's log in quickly.
sign in. So I'm solving this problem for the first time, and let's see how much time I will take to solve this problem. Okay, I will try to do as fast as possible for me. And let's see, we will iterate over each row. And m plus n है ना, तो int m is equals to matrix dot length, and int n is equals to matrix of 0 dot length. Okay, we have taken the number of rows, number of columns in consideration. Now we will implement a for loop for int I is equals to 0, I less than m, and I plus plus, and we will iterate over each row through this I pointer, and for each row we will implement binary search. So for implementing binary search, we will take low pointer, int low is equals to 0, int high is equals to n. Okay, n minus 1 I should say. And while low is less than equals to high, we will create a mid pointer that will be low plus high minus low divided by 2. And then if we will check if matrix of I comma mid is equals to, okay, that will be equals to our target. Okay, if it is equals to our target, then we will return true. Okay, otherwise we will check if else, we will check else if matrix of I comma mid is equals to greater than our target. Then what we will do, if it is greater than our, mm, we need to search on the left side, so we will update high with mid minus 1. Otherwise we will do low is equals to mid plus 1. So this is right up to this point, and we will keep iterating over that, and we will return true. Otherwise, if we did not find the target, then we will return false. Okay, return false. Okay, I hope that this solution should work out, and we could write the code in just 2-3 minutes. Let's submit it. I was able to solve this problem in 3 minutes only, if it works for each test case. It is working, right? Okay, this is crazier. I could write the solution in just 3 minutes. So, hey guys, if anyone is watching, do you want me to explain this problem? How I solved it? Like how to find a target in a 2D matrix. Do you guys want me to explain this problem? If and it was the first time I solved that problem. Actually, it is easy, but here it is mentioned that it is medium. Search in a row and column wise sorted matrix. Column wise sorted matrix. Okay, let's check this problem as well. What it states. Congratulations on 50 days batch, solving problems 50 plus days into time. Okay, generate image. We will share this image on LinkedIn. Where is it? Okay, generating. And
What achievement for me? So let's read the problem. The problem states that write an efficient algorithm that searches for a value target in a m cross n integer matrix. The matrix has the following properties. Integer in each row are sorted in ascending order from left to right. Okay. Integer in each column are sorted in ascending order from top to bottom. So how can we like make sure that we are also checking for the column as well? We will do the same. जैसा जैसा सॉल्यूशन हमने उसके लिए लिखा वैसा का वैसा इसके लिए लिखेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा आई थिंक लेट्स ट्राई इट क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग द सेम सॉल्यूशन क्योंकि वी हैड ओनली compared for the rows only we had nothing different for the columns let's see if it is the right answer it is right answer but mm, क्या गलत क्या हो सकता है इसने लाइक दो अलग अलग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रखे हैं सेम प्रॉब्लम के लिए लाइक सेम सॉल्यूशन के लिए अगर सेम सॉल्यूशन से हो सकता है ये लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन these two problems in the first problem we were asked that each row is sorted and in the next problem it was given that each column is also sorted so was there it is not number of ones we were solving this and that okay search search in 2D matrix and search in row and column. Okay, ये हम्म, ठीक है brute force approach is ठीक है extremely naive we will get a complexity of n square okay n cross n ठीक है we will get time complexity of n cross n and better approach is to use optimized approach binary search algorithm n plus log n and the optimal solution is mm, is it not exactly how we did it okay so they did it like that अच्छा ठीक है तीसरा अप्रोच भी मिल गया एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच एक दूसरा जो हमारा अप्रोच था वो बेटर था बट ऑप्टिमल नहीं था ऑप्टिमल अप्रोच ये होगा कि हम फोर लूप को भी इराडिकेट कर दें फोर लूप को कैसे इराडिकेट करेंगे लाइक ड्रॉप कर दें बट आई वाज लुकिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रॉब्लम्स ओके and a task is to find if it exists in the given matrix or not search in 2D matrix. Okay, brute force approach we had seen already. The better approach will be optimize approach using binary search. Question is specified that each row in the given matrix is sorted. Therefore, to find targeting, we don't need to search column by column. Instead, we can efficiently use the binary search algorithm. Group say I to select particular row at a time. Okay,
our approach was better. What is the optimal approach? Like this is the given matrix cell O assume we are starting at level cell from 0, 0 and we are searching for 14. Now we this row and column are both sorted and in increasing order, so we cannot determine how to move I row wise or column wise. That is why we cannot start traversal from 0. ये वाला अप्रोच तो मैंने सोचा ही नहीं. Like we got time complexity of n plus log m, so we can improve this solution a little bit. Where is the problem? Where is the problem? Where is the problem? It is the problem that we were solving, right? जिसमें जिसमें okay, search a 2D matrix number 2 and we can improve it. We can improve it by mm, if the current element is greater than target, you need a smaller element to reach the target, but the column is in increasing order and so it contains only greater elements. So we will eliminate the column by decreasing the current column value by 1. That is column minus minus. If the current element is less than target, in this case, we need the bigger element to reach the target, but the row is in decreasing order, and so it contains only smaller elements. So we will eliminate the row by increasing the current row value. What the problem actually states? A row is in increasing order. Columns are also in increasing order. If we are checking the mid element, that is the mid of the row, mid of the column, and if it is greater than target, it is less than target. So we should increase the number of, and if it was greater than, mm, how to do so? A solution was implemented in 6 milliseconds, and we need to improve it. How can we improve it? Mm, ठीक है, we have number of columns, number of rows, and instead of doing this, we gotta do something else. We gotta do something else. I need some water.
Okay, so we will start from the first cell. Mm, and we will so let's say int row is equals to 0 and column is equals to n minus 1, and we will check if the element at index, so we will check if while row is sorry row row is less than m and column is greater than equals to 0, we will check if um, we will create a variable current element is equals to matrix of row comma column, and then if current element is equals to target, then we will return true, else we will check if than current element is greater than target, then what we will do, if it is greater, we will reduce the column. Because all the elements in the right are already greater than this, else we'll do row plus plus. Row plus plus, that means elements. We are starting from last column and first row. Okay, target not found, then return false. Mm, spelling mistake, रिटर्न होना था और सेमीकोलन, सेमीकोलन कहाँ नहीं है? हम्म, अच्छा ठीक है, सेम है. Let's run this solution and check if it is working again. अरे यार, क्या सिली मिस्टेक्स बता रहे हैं. एम को एन कर दिया, सॉरी एन को एन कर दिया. Okay, it worked, and let's submit it. It is a little better. It is what it is the better solution. Let's move forward. We've done this also. Find peak element. Peak element क्या होता है? जिसके आगे और पीछे दोनों ही लोग उससे छोटे हैं, right?
So a peak element in 2D grid is an element that is strictly greater than all of its adjacent neighbor to the left, right, top, bottom. Okay. Mm, ये थोड़ा tricky लगता है. A peak element in a 2D grid is an element that is strictly greater than all of its adjacent neighbors. So we will have to check up, down, left, right for every index. Suppose we are here, we need to check uh, the top, the bottom, the left, the right. We need to check all the four sides for each cell. Take a zero index array and plus any matrix where no two adjacent cells are equal. Find any peak element and return the length to array. Okay, 1 1 and 2 3. 0 1 and 2. Wow. Hello, hello. How are you? I'm fine. God's chosen emperor पर्व चौधरी. कहाँ गया पर्व चौधरी भाई? है क्या पर्व चौधरी यहाँ? बताए बिना भाग गया था पर्व चौधरी. Why you delete your messages? You have already deleted. Then you will message के reply. I don't. I'm boycotting India versus Pakistan match. Sean, where are you? God's chosen emperor, are you there? Element given zero index array matrix. Hmm. Are you watching today's match? Let's check the score. What is happening there? Hmm. India versus Paki है ना आज? Because अरे यहाँ पे वो विजिट नहीं क्या? Okay, watch your match. मैं कह रहा था कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को. आई एम बॉयकॉटिंग इट.
वो ऐसे भी मैं देखता हूँ ज़्यादा मैच। फिर क्या किया? 164 अच्छा इंडिया जीत रही है। इंडिया तो जीतेगी भी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अगला। You guys carry on watching a match. We need to find the peak element. Okay, so let's continue with our binary search playlist. But before that, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extreme. Adjacent cells will be similar. What does that mean? If it is 2, it cannot be 2, it cannot be 2, it cannot be 2, it cannot be 2. So the problem is stating you're given a 2D matrix where none of the two adjacent cells can be similar. Your task is to figure out the peak element. And the part 1 of the problem, इंडिया we जीत had a गए। 1D array where the peak element Congratulations। was an element that is greater than its left counterpart and it is greater than its right counterpart. So any element that was greater than its left and greater than its right was called as a peak element. Now in this particular problem, since a 2D matrix is involved, we will call an element a peak element only if it is greater than its left counterpart, greater than its right counterpart, greater than its top counterpart, and greater than its bottom counterpart. For an example, I can say 9 as a peak element. Why? Because it's greater than its top counterpart, greater than its right, greater than its bottom, greater than its left. Can I say 7 to be a peak element? Yes, I can say 7 to be a peak element. Why? Because 7 is greater than 3, the left, greater than 1, the top, greater than 2, the right. But on the bottom, we don't have anything. If you do not have anything, then it will be considered as -1. So the problem is clearly stating all the outer parts will be having -1. So thereby 7 can also be called as a peak element. Now in a 2D matrix, there can be simultaneous, like there can be multiple peak elements. Your task is to return the row and column of any one of them. Yes, any one of them. For an example, you decide to return this peak element. It is on the row 1 and it is at the column 1. So you'll have to return 1 comma 1. In case you decide that you have to return for this one, so it's on the third row and it's on the fourth column. So you'll have to return 3 comma 4. So this is what the problem is stating. Now if this problem comes up in an interview, what is the first solution? The first solution that I can think of is like the extreme brute force. I scan through every element. Yes, I will be scanning through every element in a 2D matrix. And whenever I'm standing at an element, I check for its left counterpart, check for its Right top, counterpart। check for its right, check for its bottom. If it is greater than all the 4 counterparts, I will be calling that element as a peak element. So if I'm scanning through every element, if I'm scanning through every element, what can be the worst possible scenario? I'll be scanning through every one till the last element, isn't it? So it will be n cross n because that is the number of elements in the 2D matrix. And if I'm checking, whenever I'm standing on an element, I'm checking for 4 directions. So for every element, I'm checking in 4 directions. So can I say that the overall time complexity, the worst possible case will be n cross 4? I can, right? Can I optimize this? I can, but by a slight margin.
Now, for the best possible case, it will be you just find out the first element to be the peak element. On an average, it will be somewhere in between. Only in the worst case scenario, the last possible element will be your peak element, and that is when this particular complexity will appear. I can only optimize the worst case scenario. I cannot optimize the best case. I cannot optimize the average case. I can definitely optimize the worst case scenario. How? Can I say, if I just return the largest element in the matrix, that will be my answer. Over here, 9, yeah, 9 is the largest. If I simply return 9, that will suffice. So if I go by the approach of finding the largest element in a 2D matrix, even in the best case, I'll have to scan through every element from the first to the last. Even in the average case, I'll have to scan through every element. Even at the worst case, I have to scan through every element. So the complexity will boil down to n cross m, but this will be a complexity for best, average, and the worst case complexity. So not that much of optimizations. Now, will this be accepted in an interview? No, they'll ask you to optimize this. So you've been asked to optimize n cross m. In this particular problem, we have a 2D matrix, and the total number of elements in the 2D matrix is n cross m. 10%. So the algorithm that we have figured out is equivalent to the search space, right? So we're searching for a peak element. And they're asking us to optimize. I cannot go through every element, because if I've been asked to optimize n cross m, that technically means I have to trim down n cross m, which means I cannot go through. That meant, if element, just think, can I say, whoever is, if you go on checking it, the high will come vertical, right? It takes too much of time. So, right column 60, then the row number max goes 0, the 5 is equal to 2. For each row, we'll check if matrix of row and my column is greater than matrix in column. Max row in column. Max row is equal to 5. If it is greater.
this option. So midpoint, that's it. No, so it's previous. Here and is equals to method and int and is equals to method 0 um, dot length and int low is equals to 0 and 5 is equals to n minus 1 while low is less than equals to 5 and mid column is equals to low plus high minus low by 2 and max row is equals to 0. We will iterate for int I is equals to 0, I less than n, I plus plus. And then if the matrix of I, comma, mid column, that is currently the mid column, is greater than matrix of max row, comma, mid column, mid column. Mid column side from max matrix of mat is same na mid column is the okay mid column then we will update max row is equals to I. Then we will check if how do we know it? Mm,
नेबर की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? What is the correct spelling of neighbor? लोग को ओवर कर दिया और क्या कॉल करा है? Find the symbol that's row. Mat mid column match the so could not be found. अच्छा रॉक्स कर दिया इसको रो होना चाहिए and what else is the top one bracket just that few left. Wrong answer. What is wrong?
Hey guys, welcome to our live stream. Whoever has joined us, you can introduce yourself. Louis was we have to invite to here. And then I is equals to 0, and if this is also correct, then matrix of I comma my column is greater than matrix of max root comma mid column then max equals to I. We are searching for the maximum element in the middle column. Okay, until here we have done it right. Check max root comma mid column is down. Then if it is where is the error? I could not find the error. Okay, this is wrong. Now let's run it and submit it. Now it is fine and done. Done industries dusted. Matrix median. I'm back again. Back again. Let's play some music.
We need to find the median and the sorted error. I hope the sound volume is not too high. We need to find the median from the sorted matrix where every row is sorted. So what will be the brute force approach? I think we can find this problem on GFG. Find the median of sorted matrix GFG. I hope it is available there. Given a row-wise sorted matrix of size n cross n, where the number of rows and columns. You guys might not be enjoying this. No copyright. Where the number of rows and columns is always odd. Return the median of the matrix. We need to sort the matrix.
What we can do, we can sort the whole array, 2D array, and then find the median. We are given a, so we can flatten the matrix into a single 1D array. सर कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। अब आए आप। यस, प्रियांशी। म्यूजिक कैसा लग रहा है वैसे, बैकग्राउंड म्यूजिक? क्या बोलना है इसमें? हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें मीडियन फाइंड आउट करना है गिवन मैट्रिक्स के अंदर। और वो हम कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग। सर को गाना गाना नहीं आता। आप आइए लाइव स्ट्रीम में गाना गाने के लिए।
कहो तो ज्वाइन करें। बता अभी जूम कॉल करूं क्या मैं? लाइव स्ट्रीम पे गाने वाने आ जाना। Then you will become a equal partner of this channel. सर बात करते हुए पढ़ाई स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। ओके म्यूजिक बंद करते हैं यार। इट्स बोरिंग। पर्व को बुलाओ। पर्व आता कहाँ है, पर्व चला जाता है। Let me call him. Where is पर्व gone? Shit. ये क्या क्या होना? Switch account. Get back to live stream. हाँ गाना गाना पड़ेगा लेकिन। So ठीक है। Such space will be from the minimum to the maximum. पढ़ा रहे हो या चेक कर रहे हो भाई? मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। मेरा लाइव स्ट्रीम का मेन मोटिव है कि मैं खुद पढूं। मेरा मोटिव पढ़ाने का नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं टीचर हूँ। आई जस्ट एक्सप्लेन so that I can remember. First column and the maximum which must be in the last column. List the two pointers meant by initiative list. ओके सर, पर्व कहाँ है? पर्व तो आए ही नहीं, तुम पर्व को बुलाने गए थे। Where is he? तुम्हें क्यों छोड़ दिया फिर उसने भोपाल? तुम भी आ जाओ पर्व के साथ।
जल्दी आओ. I am waiting. Mm, check. Laptop. No. And we will initialize the minimum and the maximum value with int minimum is equals to the teacher dot max value. हम इसमें implement करेंगे binary search on answer space. Right. हाँ. Max is equals to integer dot min value. आ गया क्या पर कहाँ बिजी है पर. So now we will iterate over each row. So int I is equals to 0, I less than n, and I plus plus. We will then update the minimum value if the element is smaller. If mat of I and 0 is less than min, nahi aaya, then we will update min with matrix of I comma 0, right? And then we will check the maximum value. मैसेज तो कर दिया मैंने, कॉल कैसे करूं. कॉल करने के लिए मेरा फ़ोन अभी व्यस्त है. कॉल करना पड़ेगा क्या. उसे ऑलरेडी परेशान कर चुका हूँ मैं एक बार. दोबारा में मेरा मन नहीं है अब. बेचारा सो गया होगा शायद. वैसे प्रियांशी, और तेरा कितना डीएसए हो गया. लीड कोड पे कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए प्रियांशी. Stop and plus one. Where then final search on room plus the likes and economic is equals to demand plus. ये सब बातें यहाँ नहीं पूछते, यहाँ तो डीएसए ही कर रहा है ना. यही पूछूंगा मैं. मैं भी तो वही कर रहा हूँ. यहाँ नहीं पूछूंगा तो कहाँ पूछूंगा. Okay. P is equals to 0. Therefore, think I is equals to 0. If I does it have this plus plus equals to per pound. ठीक है, पर पाउंड फंक्शन बनाएंगे. 58. अरे वाह, दैट इज गुड. और मैंने सुना ग्रुप पे मैसेज आया कि बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं अपने कैंपस में, फिर से डेटा चेक करा रहे हैं. पराग सर का मैसेज देखा ग्रुप पे.
ये तो गुड न्यूज़ हुई ना। सारा डेटा गलत दिया उनका तो हर बार का है। पता नहीं क्या, कौन सा नशा करके। अरे यार, मुझे कभी कभी लगता है क्या कभी अपने टीचर्स मेरी स्ट्रीम देखेंगे क्या। मैं उनकी तारीफ कर दूं ज्यादा और फिर पता चले कि वो मेरी स्ट्रीम देखने आ रहे हैं। What is the question? Okay. Nice. हम्म, तूने चेक किया क्या? मैंने तो अभी देखा भी नहीं। हम्म, सबका ही गलत है। कल फिर परेशान होंगे ये। क्या एक बार इनसे बोलो कि सर एक बार एक्सेल एक्सेल का कोर्स कर लीजिए। हाँ ब्रो, मैं कोशिश करूंगा ऐसा करने की। मैंने सोचा था कि मैं पोमोडोरो का एक स्क्रीन ऐड कर दूंगा जहाँ पे मैं सिर्फ, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ना एक एक विंडो पोमोडोरो का टाइमर का लगाऊं, जिसमें लाइक 25 मिनट तक मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान दूंगा। बट यू नो व्हाट, के कोई आ ही नहीं रहा था। लाइक आई हैव सॉल्व many problems in last 2 hours, but no one was watching, and I was getting bored. That is why I asked my friends to come to the live chat. Knowledge fact, thank you, bro, for joining us. मैं बोर हो रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चैट करने लगता हूँ। हम्म, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है एक तो। प्लेस लिख दिया क्या मैंने पी की जगह? यहाँ पे प्लेस नहीं पी होगा, और मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा। नाउ इट विल रन फाइन। वीडियो कॉल में आ गया। So this is also done, and I think strings we will start tomorrow. This was it for today, and it is already 1 a.m. कंटिन्यू करना चाहिए क्या? स्ट्रिंग्स के 15 प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आज, बट आई थिंक वी विल डू देम टुमारो। मजा आएगा कल। देन वी विल
Jump to LinkedIn. LinkedIn linked list, but there's no one watching and solving problems with me. And knowledge fact, actually, I'm trying to build a community of coders where we can help each other to bring some consistency and discipline to solve problems, right? हाँ प्रियांशी, मैं अभी सो रहा हूँ। तू ही है बस। मुझे लगा ये नॉलेज नॉलेज फैक्ट वाला बंदा भी है अभी। पीपल स्टार्ट टेलिंग मी कि बात मत कर, पढ़ाई कर। प्लीज। तेरा पर्व तो आया नहीं यार। पर्व कहाँ सो रहा है? चलो कल स्ट्रिंग्स खत्म करेंगे और फिर लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट कर देंगे। तेरा नहीं, हाँ, हमारा अपना प्यारा पर्व। अरे आज नवरात्रि है, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, जो कोई देख रहा है। नॉलेज फैक्ट इज आस्किंग, भाई क्या शेड्यूल है आपका डेली का रूटीन? ब्रो, वैसे मैं हर लाइक लास्ट 3 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शाम को 7 बजे से स्ट्रीम स्टार्ट कर दूँ, बट ना हो नहीं पा रहा है कुछ reasons की वजह से। बट आई विल ट्राई फ्रॉम टुमारो, वी विल ट्राई टू स्टार्ट आवर स्ट्रीम एट 7 p.m. बट normally around 9 to 10 we start our stream. Like at any cost, I will try to start streaming at 9 or 10. But I am trying to start the stream early as possible. If you want to like join us and solve problems together, you can join our Discord server. You will get constant notification there and every update. People are joining us now. अब तो stream end करने का time नहीं. If you guys are watching and are interested, then we can solve strings problem. Are you guys interested? Is there any option to do a poll in the live chat? अच्छा, टोटल स्टडी शेड्यूल पूछ रहा है भाई। भाई अभी ना मेरे प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, तो लाइक मेरा दिन निकल जाता है कंपनीज के असेसमेंट देते हुए, और मैं अभी घर पे रह रहा हूँ, तो लाइक मेरे और भी कुछ काम होते हैं। और उसके बाद में आई ट्राई टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग, व्हाइल आई एम स्ट्रीमिंग आई ट्राई टू डू एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। एंड सुबह के टाइम मैं रिवाइज करता हूँ जो भी मैंने आज किया, और जो मैं आज करने वाला हूँ वो मैं सुबह के टाइम रिवाइज करता हूँ उठने के बाद। सो दिस इज इट। एंड one more thing, let me clear you. I am not a teacher. I'm not trying to teach you. I'm just learning myself and trying to build। 15 20 हो ही नहीं पा रहे हैं यार। 2 3 घंटे में 15 20 रेयरली कभी हुए होंगे। बट लाइक every day I'm constantly solving 5 to 10 problems, around 5 to 10 problems। बट सीक्रेट रिवील कर दिया भाई ने। सीक्रेट है ही नहीं कुछ, मैं हर स्ट्रीम में बोलता हूँ। देयर इज नथिंग लाइक। ये टीचर है, इनका प्लेसमेंट हो गया है। अरे नहीं भाई, अभी मैं खुद प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कोई प्लेसमेंट हुआ नहीं है अभी। सो वन थिंग आई कैन गारंटी यू, दैट आई विल हेल्प you become disciplined and consistent with your studies, right? I will give you notification every single day around 9 p.m. You just have to bring your laptop and your notebook and start studying with me, right?
And I have also some plans to like start some cohort kind of thing where we will be like solving many problems together. भाई कॉलेज वाले बच्चों ने ये बात कैसे लाइक नॉलेज फैक्ट मैंने तो ये बताया ही नहीं ना तुम्हें कि लाइक अभी कुछ दिन से मेरी स्ट्रीम ठीक से नहीं चल रही है। बताया क्या मैंने? ऐसा टोटका तो नहीं किया यार, लेकिन वो ना मैं खुद मेंटली स्टेबल नहीं हूँ 2-3 दिन से, तो उसकी वजह से लाइक मैं सही शेड्यूल पे स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी it is actually the fact. Let me show you my channel's performance in the last 3-4 days. आज 10 सब्सक्राइबर्स ऐड हो गए। देखो लाइक मतलब it was going good from day 12 and it went down on September 15. It was fine. Then it was on the peak on 16 September. After that, it is just going down and down and down. Just because I'm not consistent with streaming. Today also we got very few views, but it is fine. Like we will come back stronger from tomorrow. So I have not showed it to you. Let me show you my channel's performance. This is how it is going. Like it has went down. नॉलेज फैक्ट इज आस्किंग डेली के कितने क्वेश्चंस करते हो। मैं कोशिश करता हूँ लाइक एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेकिन वो हमेशा हो नहीं पाता है। कभी कभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं जो मेरे से बन ही नहीं रहे होते हैं, तो लाइक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ऑन दोज डेज आई हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स, 1 or 2 प्रॉब्लम्स समटाइम्स, बट when my day is good, I have solved like 7-8 problems in one day as well. But we will try to solve as many problems. Like जैसे कि कल का टॉपिक स्ट्रिंग्स है, तो strings is something I would say easier. So I can plan to solve all the problems related to string tomorrow itself, right? This is how I'm doing. कल strings में ना 15 problems है, तो I can do 15 problems in one day of strings. Remove outermost parentheses. It is done using stacks. इसके रिसोर्सेज भी नहीं है। रिवर्स अ वर्ड वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ये हम कल ही करेंगे, कल ही करेंगे। लार्जेस्ट ऑड नंबर इन अ स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स, check whether one string is a rotation of another, check if two strings are anagram of each other, sort characters by frequency, maximum nesting depth of parentheses, Roman number 22 and vice versa. Okay, these are all medium problems on strings. We can definitely solve them. And for your kind information, okay, 5 4 learn linked list, learn double linked list, medium problem on LL. These are so many medium problems on LL. LL करने में मजा आएगा, linked list, and then recursion and bit manipulation. So I think I should end the stream now.
I hope I have answered all your questions, knowledge fact, right? Should we end the stream? Are you guys interested? If you want I should solve string problems, then we can solve string problems. Otherwise, I am ending the stream. Mm. What did you? Where is your chashma? Here is my chashma. ये रहा. I don't like it यार. बहुत बड़ा बेकार है. Mm, अच्छा ठीक है. स्ट्रीम एंड करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. Where is that stream about? Okay. From tomorrow I will wear it for sure. Wanshi. ठीक है. Good night, guys. See you tomorrow. OG Dhakar. Thank you so much, Priyanshi, for joining us today. Thank you so much. You guys are just amazing. Okay, so this was it for today. Good night, Priyanshi. Bye bye. Okay. क्योंकि it is getting late. Knowledge fact is asking by guys बोलेंगे तभी करोगे क्या strings. हाँ, क्योंकि if you are interested and are willing to solve problems at such a late time, then I can do so as well. But बट मुझे सोना भी है. मैं कल भी कर सकता हूँ ना. मेरे पास कल का भी प्लान है. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आज ही करूँ सारे प्रॉब्लम्स. आई स्टिल हैव सम टाइम. कितने 20 days हुए ना. 25 more days and 300 प्रॉब्लम्स. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. अच्छा ठीक है. करते हैं. स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं आज. सो इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ. बट यू But you guys will left me alone solving the problems. ठीक है. अभी फुल स्क्रीन में दिख रहा है ना आई गेस. भाग गए सारे के सारे. तो ओके. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम स्ट्रिंग्स. आज इजी वाले प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. कितने प्रॉब्लम्स है इजी में? बेसिक और इजी 7 प्रॉब्लम्स. सो कंटिन्यू. remove remove outermost parenthesis. Reverse words in a given string palindrome check. ओके. इसका ठीक है. लिक्विड पे तो गिवन है ना प्रॉब्लम. It is a easy problem. Okay, a valid parenthesis string is either empty or
A plus B where A and B are valid parentheses string and plus it is a string concatenation. Okay, a valid parenthesis string S is primitive if it is non-empty, then there does not exist a way. So let's add a VS Code and I'll say mm, put this here and a VS Code here and fix it here. नॉलेज फैक्ट इज सेम कभी कभी आपको शो नहीं करता बट हम होते हैं स्क्रीन में. ओके थैंक यू सो मच ब्रो. मैं मुझे सच में नहीं दिखाई देता लाइक जीरो व्यूअर्स दिखाई देता है कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम. We need to remove the other parentheses. ठीक है we will iterate over the string to check if it is open parenthesis. इसका इजी सॉल्यूशन एक तो स्टैक से हो सकता है एक हो सकता है काउंटर से. We will count the open parenthesis tag and keep counting and then mm, we will create a counter. mm, and once we encounter the open parenthesis मतलब जैसे फर्स्ट पैरेंथेसिस जब भी एनकाउंटर होगा तो हम ना काउंटर को स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद के जितने भी लाइक पैरेंथेसिस के अंदर के सारे कैरेक्टर्स आएंगे उनको हम स्टोर करते जाएंगे रिजल्ट अरे में. एंड ठीक है पहले हम ना एक स्ट्रिंग बनाएंगे रिजल्ट नाम से. सो लाइक स्ट्रिंग बिल्डर से बनाते हैं ऑब्जेक्ट. तो लेट्स से बिल्डर रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ये सही है सिंटैक्स है ना. ये सही था. स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ठीक है. um, let's say int count is equals to 0 and then for ठीक है. we will like check for
We will check for the open parenthesis. After the first open parenthesis, we will store all the other characters in our result. ठीक है? So, given string क्या है S. So we will check for character C in S dot to character array. Right? Character array में convert करेंगे इसको और इसके सारे characters के लिए हम iterate करते जाएंगे और अगर हमारा करंट कैरेक्टर C इज इक्वल्स टू होगा हमारे लाइक ओपन पैरेंथेसिस से पैरेंथेसिस कहाँ गया हाँ अगर इसके पैरेंथेसिस के इक्वल है और हमारा जो काउंटर है काउंटर अगर हमारा 0 से बड़ा है मतलब दैट मीन्स 1 है if our counter is greater than 1 that means if count is greater than 0 sorry not 1 it's greater than 0 then we will add result dot append c ठीक है मतलब अगर हमारा काउंटर 1 कब होगा हमारा काउंटर 1 तब होगा जब हमारा मतलब फर्स्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर हो चुका होगा उसके बाद में हम क्या काउंटर को अपडेट कर देंगे मतलब यही करने के बाद ना हम अपना काउंटर को बना बढ़ा देंगे लाइक काउंटर सॉरी काउंटर नहीं काउंट प्लस प्लस ओके तो इसके बाद वाले आइटरेशन में जब चेक करेगा ना तो हमारा काउंट 1 होगा तो रिजल्ट में ऐड होते जाएंगे आने वाले कैरेक्टर्स राइट एंड if it is not equals to the open parenthesis then what we will do we will reduce the counter one more thing we should keep in mind that if counter is greater than 0 then it will be our inner closing bracket अच्छा ठीक है जितनी जितनी बार भी हमें ना ओपन ओपन ब्रैकेट दिखेगा उतनी बार हमारा ना काउंटर इंक्रीज होता जाएगा और जैसे ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिखेगा तो हमारा काउंटर डिक्रीज होता जाएगा तो हम काउंट को माइनस माइनस कर देंगे and then we will check if it is greater than 0 if it is greater than 0 that means we are inside our outermost parenthesis so it will be count greater than 0 then we will append result dot append c okay and then we will return result to string return result dot to string okay अभी तक का लॉजिक तो समझ में आया कि हम एक काउंटर लेके चलेंगे काउंट को 0 रखेंगे जब हमारा पहला पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगा तो हम काउंट की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे और अगर दोबारा हमें ओपनिंग मतलब फर्स्ट ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा तो हम काउंटर को इंक्रीज करते जाएंगे लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस टेस्ट केस जैसे ही हमारा पहला पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगा तो हमारे काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी देन उसके बाद में सेकंड पैरेंथेसिस जब एनकाउंटर होगा तो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी लेकिन उसके बाद में जब काउंट क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो हमारे काउंटर की वैल्यू 1 डिक्रीज हो जाएगी बाय 1 राइट but it will still be 1 then again it will encounter it will increase and then decrease and then it will increase बट यहाँ पे आके तो ये 0 हो जाएगी सुमित गायकवाड़ हेलो सुमित ब्रो आई थिंक यू माइट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं ये पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ वैसे तो स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स
पहले कभी जब मैंने स्ट्रिंग्स पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब स्ट्रिंग्स वाले प्रॉब्लम्स किए थे, तो ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं किया था मैंने। एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं किए थे स्ट्रिंग्स के तो। हेलो 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 सुमित भाई, हाउ आर यू? अच्छा, रन करके देखते हैं। आई होप देयर इज नो एरर इन दिस प्रॉब्लम। ओके, इट इज वर्किंग एंड लेट्स सबमिट इट। ठीक है, इट वर्क, इट इज वर्किंग। हेलो सुमित भाई। नहीं भाई, लिंक्ड लिस्ट नहीं आता है अभी। लाइक आई विल स्टार्ट लर्निंग after solving string problems, then solve linked list problems from maybe tomorrow or day after tomorrow. We will be solving linked list problems. Like here in the list, striver की शीट में ना स्टेप नंबर है 6, मतलब स्ट्रिंग्स के जस्ट बाद लिंक लिस्ट ही करने वाले हैं हम। So maybe from 23rd or 24th of September we will start solving linked list problems, and we will religiously follow these problems. Shit. Okay, so light चली गई। Guys, I think now I have to end the stream. I don't want to. Like ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट वाला। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो लेट्स मार्क इट डन। स्ट्रिंग्स का पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। रिमूव आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस। एंड पावर कट की वजह से आई थिंक आई शुड एंड द स्ट्रीम। हिज नॉलेज फैक्ट इज आस्किंग लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सीखोगे कहाँ से? ब्रो, देर आर some resources that I keep telling to my viewers about. There is Raghav sir on College Wala and GFG as well, right? Am I visible? लाइट चली गई है गाइस यहाँ पे, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं राघव सर को फॉलो करता हूँ। लाइक कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो मैं राघव सर की वीडियोस देखता हूँ। राघव सर पढ़ाते हैं जीएफजी पे। वो पहले पढ़ाते थे कॉलेज वाला चैनल पर, और अब वो जीएफजी पे पढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा देर इज लाइक फॉर ब्रशिंग अप माय जावा बेसिक्स आई फॉलो इंजीनियरिंग डाइजेस्ट चैनल, एंड एंड फॉर लाइक लर्निंग जावा फुल स्टैक कॉन्सेप्ट्स आई फॉलो अनुज भैया, जो पहले अपना कॉलेज पे पढ़ाते थे, राइट? कंटिन्यू करें क्या? लाइट चली गई है वैसे, गर्मी लगेगी लेकिन मुझे यहाँ। इट इज़ 1:23। I can keep going till 5 a.m. in the morning. Sumit is asking which college, bro. Bro, I am in a popular college of Middle India. Bro, I'm from LN City, Bhopal. You might have heard of it so many times. Have you heard of LN City, Bhopal in MP? It's a popular college. Tier 3 college है वैसे तो वो, but it's a good college. क्या करना चाहिए, अब तो एंड कर देते हैं यार स्ट्रीम। Do you want me to solve another problem? The next problem is reverse words in a given string. अच्छा, ये भी करता हूँ। ये वाला तो शायद मैंने लिंक लिस्ट बोल रहा हूँ यार, लीड कोड पे मैंने सॉल्व कर रखा है ये। अच्छा, नहीं किया क्या? वी नीड टू रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। प्राइवेट कॉलेज है ब्रो। नॉलेज फैक्ट इज आस्किंग वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? प्राइवेट कॉलेज है ब्रो। Tier 3 कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, ओवर क्राउडेड कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे हैं, बट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स is above average. Like matlab in MP it is the best college, but
नॉलेज फैक्ट इज सेइंग यस भाई, आज आज मैं स्ट्रिंग इजी कंप्लीट करके सोऊंगा। चलो ठीक है, तो करते हैं। A word is defined as a sequence of non-space characters. The words in S will be separated by at least one space. Return a string of the words in reverse order concatenated by a single space. The return reverse. Hmm, ठीक है. So we need to reverse the words only, not the characters. So we will start. Hmm, एक तो like inbuilt functions से भी कर सकते हैं हम, built in functions से. Hmm, so लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस हटाने के लिए कौन सा मेथड होता है? एक क्या मेथड होता था यार, मैं भूल गया क्या? क्या मेथड होता है? ट्रिम करके होता है ना कुछ। लेट्स ट्राई। देखो, बिल्ट इन फंक्शन से रिवर्स करने के लिए क्या होगा? स्ट्रिंग एरे वर्ड्स इज इक्वल्स टू एस डॉट ट्रिम डॉट स्प्लिट एंड प्रियांशी सोई नहीं अभी? So it is used to remove trailing zeros, right? And spaces. Leading and trailing zeros. Zeros नहीं यार, spaces, right? मेरा फेस विजिबल है क्या? Spaces and split by one or more spaces, right? यहाँ पे जो स्प्लिट वाला जो सिंटैक्स है ना, वो वर्ड्स को स्प्लिट करने के लिए यूज होता है। अब इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? बिल्ट इन मेथड्स कौन सा लगाएंगे? कलेक्शंस वाला। कलेक्शंस डॉट रिवर्स एंड जो वर्ड्स नाम की एरे बनाई है हमने, उसको एरेज डॉट एज लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे एरो को। एरे क्या है? वर्ड्स नाम से, वर्ड्स। एंड ठीक है, एंड दिस इज इट। अब जो हमारी वर्ड्स नाम की एरे है वो रिवर्स हो जाएगी। हम्म, अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा। ये तो हमारी एरे बन गई वर्ड्स नाम की, हमें रिटर्न करनी होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये तो मुझे आता ही नहीं है शायद। एरो को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं यार? हाउ टू कन्वर्ट string array to array of strings to string, ऐसा ही होगा ना? जावा देर आर सेव अच्छा ठीक है, स्ट्रिंग डॉट जॉइन का यूज कर सकते हैं हम। द मोस्ट एफिशिएंट एंड रिकमेंडेड मेथड फॉर जावा 8 and later is use string dot join. There are several ways to convert an array of strings into a single string. ओके, यही वाला करते हैं क्या? string dot join. ओ ओके, we have to return it. Return string dot join। अब लेकिन इसमें स्पेसेस कैसे ऐड करेंगे?
इसके एग्जांपल्स चाहिए क्या और भी? अच्छा ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। स्पेस, तो सेपरेशन क्या है हमारा? स्पेस है, एक स्पेस लाना है वर्ड्स के बीच में और बाकी वर्ड्स नाम की एरे और सेमीकोलन। नाउ इट इज फाइन, लेट्स रन इट। ओके, इट इज वर्किंग, ग्रेट। Let's submit it. It is working, beats 35%. It can be better. So what will be the better approach? Mm, it was a decent method. यहाँ पे देखते हैं और possible solutions क्या हो सकते हैं इससे better. So problem statement, given a string s, reverse the words of the string. Okay, this is an amazing program. Program amazing is this. ठीक है. So we use brute force. The approach, use a stack to push all the words in a stack. Now all the words of the strings are present in the stack, but in reverse order. Pop the element of the stack one by one. Okay. So he is using stack. Stack का syntax ये है, for int I, string str is equals to space. Okay. S dot character at I equals to space as the stack dot push str. Str is equals to empty space, else str plus equals to s dot character at I. मुझे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन तो पता ही नहीं है. ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है? We start reversing the string from the end until we hit a space. It indicates that we have gone past a word and now we need to store it. We check if our answer variable is empty or not. If it's empty, it indicates that this is the last word we need to print and hence there shouldn't be any space after this, this word. If it's empty, we add it to a result with a space after it. Here's a quick demonstration of the same. ठीक है, left right string temp and answer while left is less than equals to right. Character ch is equals to s dot character at left. That means starting character. ये दोनों तीनों मेथड तो मेरे को और समझ नहीं आ रहे हैं. बिल्ट इन मेथड कितना इजी है. स्ट्रिंग्स तो इजी होना चाहिए ना यार. ठीक है, फाइन. पीक एलिमेंट इज डन. ये सारे टैब्स क्लोज करो. Reverse words in the string median of row by sorted matrix. Close it. Close it. अब तो गर्मी लग रही है यार.
थ्रीसम। चलो एक बार एक साथ करते हैं एक क्वेश्चन। ओके, वेट अ मिनट। मैंने सॉल्व किया हुआ है वो पहले भी। कहाँ पे था वो? एरे, मीडियम, टू सम, थ्रीसम इसी में होगा ना? थ्रीसम ऐसा ही होता है ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। मतलब ए प्लस बी बोल रहा हूँ मैं, मतलब दो। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम रिमेनिंग भी है। रिवर्स पेयर कर लिया था वैसे मैंने। ये रहा थ्रीसम। अच्छा, रिवीजन भी हो जाएगा। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स। हमें सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं, such that like I is not equals to j, I is not equals to k, j is not equals to nums of I, j, k is equals to 0। ठीक है, रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमने एक एरे लिस्ट बना लिया आर ई एस नाम से। ठीक है। सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। तो एक पॉइंट ये है कि उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए सॉल्यूशन सेट में। एक वेरिएबल ले लेते हैं int n is equals to nums dot length, and then we will टू सम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नम्स ऑफ के को इक्वेशन के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस ऑफ नम्स ऑफ के हो जाएगा। तो वी विल हैव टू फाइंड टू नंबर्स, वो सम इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ के। ऐसे ब्रूट फोर्स से करेंगे तो एन क्यूब तक जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? एरेज डॉट सॉर्ट, पहले तो सॉर्ट कर लेते हैं नम्स। ओके, नहीं लेकिन सॉर्ट करेंगे तो इसके इंडेक्स मिस हो जाएगा। मैं अपना ही अप्रोच भूल गया। टू पॉइंटर से सॉल्व हो सकता है ये। एक मेथड तो, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये होगा कि हम थ्री नेस्टेड लूप्स लगाएं। क्या हो रहा है?
Guys, I have to end the stream. I will be back tomorrow.